अच्छा, मई 2020 वेरिएंट 11 करने लगे हैं अभी हम लोग। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कारा's बिजनेस मेक्स वैक्स कैंडल्स। ठीक है, कैंडल्स बनाते हैं। शी सेल्स देम टू रिटेलर्स एट लो प्राइसेस। शी गिव्स, रिटेलर्स को बेचते हैं, देखो फाइनल कस्टमर्स को नहीं बेच रहे, रिटेलर्स को बेच रहे हैं, दुकान वालों को बेच रहे हैं। कारा's business makes wax candles. She sells them to retailers at low prices. She gives retailers 60 days to pay. She gives retailers 60 days to pay, यानी कि 60 days का हम उधार उसको देते हैं, अपने जो रिटेलर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं। Kara has to pay her suppliers when raw materials are delivered. अच्छा, ये क्या सीन है यार? मतलब ये जब स्टॉक खरीदती है तो फौरन पैसे निकाल के दे देती है। तो ये कैश पे, बेसिकली कैश पे परचेजिंग कर रही है। लेकिन जब वो सेल करती है अपने रिटेलर्स को, मतलब जो इनसे दुकान वाले खरीदते हैं, उनको ये 60 डेज का क्रेडिट पीरियड, 60 डेज का उधार ऑफर करती है। मतलब यार ये कोई अच्छी चीज है क्या? मतलब डू यू थिंक इट्स लाइक गुड मैनेजमेंट ऑफ कैश? मतलब आप उधार पे बेच रहे हो और कैश पे खरीद रहे हो, मतलब तो बहुत खतरनाक पोजीशन है कि भाई आपके अपना पैसे तो फंस ही गए सारे। आप आप ये चीज खरीद के आ गए और पैसे भी दे दिए, और जब आपने कस्टमर को बेचा तो कस्टमर ने आपको पैसे ही नहीं दिए। अब आपकी जेब भी खाली है, दुकान भी खाली है। अब आप और स्टॉक खरीद रहे हैं तो और पैसे दो, फिर बेचा, फिर वो पैसे आराम से देगा। तो बीच में आपके तो पैसे गए ना, बीच में तो स्टॉक लॉस नहीं हो रहा, लेकिन वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक हो गया ना, फाइनेंस तो ब्लॉक हो गया। तो वो है, फिर आपको अपना खर्चे वर्चे पे करने में मुश्किल हो रहा होगा बेसिकली। ये इसको यूं अच्छे वर्ड्स में कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे ऑफ करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। Kara used crowdfunding to set up her business. The bank would not give Kara a loan as she did not have a business plan. Last year revenue was $50,000. Demand is increasing, but Kara is not yet able to benefit from economies of scale. 50,000 का रेवेन्यू था और economies of scale का as such benefit नहीं हुआ. She said cash flow is a problem. Obviously cash flow is a problem. आपकी हरकत तो देखो, कस्टमर्स को उधार दिए जा रहे हो, सप्लायर को कैश दिए जा रहे हो, तो डेफिनेटली कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आएंगे ना. दैट्स obviously. All cash inflows are used to buy inventory. So basically they are not managing their cash flows well, and that is why she is facing actual cash flow problems. ठीक है. Part A, define crowd funding. Define crowd funding. Crowd funding क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ. क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई एक बड़ा इन्वेस्टर, जैसे अगर मुझे फाइनेंस चाहिए, सही है, एंड दिस इज, मुझे चाहिए फाइनेंस, 100,000 का फाइनेंस चाहिए, सही है। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं एक बड़े इन्वेस्टर से ये पैसे ले लूं। लेकिन अगर मुझे कोई एक इन्वेस्टर ना मिले, अब कोई बिजनेस मेरे, जैसे कोई इन्वेस्टर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा अगर, so what I can do is I can arrange this finance from multiple investors. जैसे अगर मेरे पास एक बड़ा इन्वेस्टर नहीं है तो मैंने लेट्स से 5 छोटे छोटे इन्वेस्टर जिनसे मैंने 20-20 हजार करके सबसे ले लिए, समझो के क्राउड फंडिंग, व्हेन आई एम गेटिंग द फाइनेंस फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स। यानी कि अगर आपके पास एक बड़ा इन्वेस्टर ना हो तो आप काफी सारे इन्वेस्टर से छोटा 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 अमाउंट अगर आप ले लेते हो तो उसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। ठीक है, सॉर्ट ऑफ शेयर्स टाइप चीज है। ठीक है, यस डेफिनेटली। ठीक है, और इसमें वैसे ये ओ लेवल्स के कोर्स में आता नहीं है, लेकिन ये दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव जस्ट गिवन, आई डोंट नो व्हाई। और खैर अगर थोड़ा बहुत इसमें, क्योंकि ये कोर्स में नहीं था उसूलन, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया, विच इज नॉट राइट, बट स्टिल अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है अगर,
तो एग्जाम में अगर ऐसा कोई चीज आ जाती है जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको फिर तुक्का भी लगा सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। फिर उसका फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते, हो जाता है कभी कभी, लेकिन नहीं होगा इंशाल्लाह ऐसा। अच्छा, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग is one of the sources of finance crowdfunding is one of the sources of finance where a small amount of investment is raised from a large number of investors. Small amount of investment is raised from a large number of investors. From a large number of investors. पार्ट बी आप लोग बताएंगे मुझे। State two economies of scale. State two economies of scale. Tell me two economies of scale. What are the two main economies of scale? Purchasing economies of scale. Internal and external नहीं, main types लिखनी है, types. Purchasing economies of scale. Good. Technical economies of scale. और भी होती हैं. Marketing economies of scale. Managerial economies of scale. Financial economies of scale. ठीक है. No, you can just write any two economies of scale. अपने ऊपर है, कोई भी लिख सकते हैं. सही है. C part. Outline two reasons. Answers आज आप लोग बताओगे मुझे. Outline two reasons why a bank might want CAIE to produce a business plan before agreeing to give a loan. क्यों business plan बनवाना चाहता होगा बैंक before agreeing to give a bank loan? Why would a bank want to see business plan? ऐसा क्या होता है? गेयरिंग बिजनेस प्लान से कैसे पता चलेगा? बिजनेस प्लान से हमें क्या पता चलेगा? फाइनेंशियल पोजीशन उसकी चेक हो जाएगी. ये सब गेयरिंग, प्रॉफिटेबिलिटी सबकी अलग अलग लिखने से अच्छा है कि एक वर्ड हम फाइनेंशियल पोजीशन लिख लेना. ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाते हैं उससे, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, तो वो और पॉइंट्स आने तो ताकि पता चल जाए ना सही गलत क्या हो रहा है, और कि क्या उनके पास ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन है कि वो लोन रीपे कर सकेंगे. ये भी पता चल जाता है कि बिजनेस का प्लान कितना स्ट्रांग है, हाउ सॉलिड दैट प्लान इज. गुड पॉइंट्स गाइस, गुड. और फ्यूचर गोल्स क्लियर होते हैं तो गोल्स के ऊपर बात लिख सकते हैं. और ये चेक करने के लिए कि वो पे बैक कर सकेंगे या पे बैक कर नहीं सकेंगे. कोई कोलेट्रल वाला अगर सीन है तो वो एसेट्स देख के पता चल जाएगा, एसेट्स. सही है. गुड पॉइंट्स. अच्छा, लेट्स राइट. Business plan might be required to business plan might be required to
assess the forecasted financial position of CAIE. Business plan might be required to assess the forecasted financial position of CAIE. This will allow the bank to this will allow the bank to analyze that whether the business will be able to repay the borrowed amount. Business plan might be required to assess the forecasted financial position of CAIE. This will allow the bank to analyze that whether the business will be able to repay the borrowed amount. Business plan might be required to assess the objectives and goals of CAIE. The objectives and goals of CAIE. This will analyze the risk involved in this wax. क्या बनाते हैं? In this wax candles business, and how clear CAIE is about her business. देखो कितना क्लियरली 2 कलर से लिख रहा हूं ना, ये भी चेक करा आपने? मैं 2 कलर से लिख रहा हूं। एक मैं ये जो लिख रहा हूं कि मैं अपना पॉइंट लिख रहा हूं, और फिर ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये वाला जो काम है, देखो जो ग्रीन से कर रहा हूं, ये मैं अपना पॉइंट लिख रहा हूं, और फिर ये जो ऑरेंज से लिख रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि ये बात मैंने क्यों लिखी, क्यों, वाई दिस पॉइंट इज एन आंसर। क्लियरली देखो कितना क्लियरली 2 फुल स्टॉप्स आपको नजर आ रहे हैं। Okay, next, part D. Explain 2 factors CAIE should consider when deciding whether to increase prices. अच्छा, प्राइस बढ़ाने से पहले क्या 2 बातें आपको सोच लेनी चाहिए हैं? बताओ भाई, क्या 2 बातें सोच लेनी चाहिए हैं? बेहतरीन, इलास्टिसिटी डेफिनेटली सोचेंगे, और कंपटीशन जरूर सोचेंगे। सही है। और क्वालिटी, मार्केट प्राइसेस देखेंगे, वही कंपटीशन हो जाएगा ना। अफेक्ट ब्रांड नेम पे तो देखेंगे, ब्रांड तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलास्टिसिटी हम जरूर देखेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हम जरूर देखेंगे, और अपना ऑब्जेक्टिव जरूर देखेंगे, क्यों प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई लीगल मसला नहीं है, वरना अक्सर कंपनीज को लीगल फैक्टर्स भी सोचने पड़ते हैं,
जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे होते हैं, तो लेकिन यहाँ वो पॉइंट नहीं है, लेकिन लीगल फैक्टर्स भी अक्सर बिजनेसेस सोच रहे होते हैं बिफोर इंक्रीजिंग द प्राइसेस। चलो हम लिखते हैं इसको। कारा विल हैव टू कंसिडर Kara will have to consider the price elasticity of demand, will have to consider the price elasticity of demand before increasing the price of wax candles. Before increasing the price of the wax candles, she must ensure, she must analyze that how much the demand, for how much the demand from retailers will decrease. यही होता है ना प्राइस इलास्टिसिटी। She must analyze that how much the demand from retailers will decrease if the price of a product, if the price of a candle is increased, as if the demand is inelastic, then only the price increase can be suggested. Then only the price increase can be suggested. यानी अगर आपकी डिमांड प्राइस इनइलास्टिक है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड नेगेटिवली नहीं करेगी, तो फिर आप प्राइस बढ़ाओ। वरना फिर अगर आपको लगता है कि प्राइस अगर बढ़ाने से डिमांड कम हो जाएगी, ज्यादा कम हो जाएगी अगर, तो फिर आप प्राइस मत बढ़ाओ। दैट्स माय पॉइंट। यानी कि अगर इन इलास्टिक है और डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, फर्क तो फिर भी पड़ता है। देखो ऐसा नहीं है कि डिमांड कम ही नहीं होती, कम तो हो जाती है, लेकिन अगर इतना सिग्निफिकेंटली अगर रिस्पॉन्ड ना कर रही हो, तो फिर हम प्राइस बढ़ाने का सोच सकते हैं। Kara will have to consider the competitive pricing in the market. क्यों बताओ, अब जरा आप बताओ क्यों? मतलब कंपेटिटर्स की प्राइसेस हमें क्यों सोचनी होती हैं? क्या हो जाएगा, मतलब अगर आप नहीं सोचोगे तो क्या हो जाएगा? Why would a business want to see के कंपेटिटर्स की क्या प्राइसेस हैं? सेल्स मेंटेन क्यों, मतलब क्या? मे बी यस, ताकि आपकी प्राइस, हाँ अगर आप, क्योंकि अगर ज्यादा आपने प्राइस चार्ज कर ली, तो अगर आप ओवर प्राइस्ड हो, उसको कहते हैं अगर आप ओवर प्राइस्ड हो, तो फिर क्लियरली फिर आपके पास कस्टमर्स तो नहीं आएंगे। अगर आप वही चीज बेच रहे हो जो मार्केट में दूसरा कोई सस्ते में बेच रहा है, then definitely the customers will switch towards the substitute products. और ओवर प्राइस्ड का भी मसला हो सकता है, और फिर ये ना हो ना कि आपकी सेल्स और मार्केट शेयर खराब होना शुरू हो जाए। सही है। कारा
CAIE should ensure that after increasing the price, good point. CAIE should ensure that after increasing the price, she should not be overcharging as compared to other competitors. CAIE should ensure that after increasing the price, she should not be overcharging as compared to other competitors. क्या लिखूं? As the customers लिखूं या फिर यहाँ पे as the retail customers लिखूं? As the customers लिखूं या retail customers लिखूं? डिफरेंस हो जाएगा ना? Retail customers. As the retail customers may switch, as the retail customers may switch to the other suppliers, other businesses, leading to lost sales. Leading to lost sales. That's good. Part E. Do you think delaying payments to suppliers is the best way for a small business to improve its cash flow? Justify your answer. Do you think delaying payments to suppliers is the best way for a small business to improve its cash flow? यानी कि अगर हम अपने सप्लायर्स को डिले करें तो क्या ये बेस्ट तरीका होगा कैश फ्लो प्रॉब्लम सॉल्व करने का? तो इसमें अब जो है वो दो अलग अलग बातें करनी पड़ेंगी. पहले हम बताएंगे कि हाँ यार, पेमेंट्स अगर आप डिले करते हो तो जाहिर है फिर आपको जब पेमेंट डिले करते हो तो फिर वो आपकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप स्टॉक भी आपने खरीद लिया और आपने पेमेंट भी नहीं की. तो इससे आपकी अपनी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहती है. और आप ये भी कर सकते हो कि फिर जब वो स्टॉक बिक जाए तब आप आराम से पे करो. तब तो फिर बेस्ट सीन हो सकता है. यस, इट्स अ क्वाइट गुड वे, बट लेकिन हर किसी को क्रेडिट मिलता नहीं है. फिर क्रेडिट मिलता भी नहीं है, और अगर आप सप्लायर्स को डिले करोगे तो फिर वो अल्टीमेटली शायद आपको कल को सप्लाई भी नहीं करेगा. फिर वो भी एक कहेगा कि यार आप पेमेंट नहीं करते हो टाइम पे, या इस तरह का कोई सीन है. तो फिर बाद में आपको सप्लाईज की प्रॉब्लम आएगी. फिर आपके पास वैक्स कैंडल्स कैसे बनेंगे? ठीक है. तो यानी कि फायदा भी होता है, लेकिन obviously it's not easy to get that credit period because सप्लायर्स इतनी आसानी से उधार देते नहीं है. ये आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आप पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हो, तब आपको इस तरह से उधार मिलता है. वरना इतना जल्दी आपको उधार सप्लायर देते नहीं है. क्यों देगा कोई आपके ऊपर? क्यों ट्रस्ट करेगा? सही. और ट्रस्ट भी क्यों? क्या मतलब सप्लायर अगर बड़ा है तो सप्लायर बोलेगा यार खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदो भाई, जाओ यहाँ से. तो मतलब why would you get credit? ठीक है. कंक्लूजन भी देना है. तो कंक्लूजन में क्या लिखें? बताओ कि सप्लायर को डिले करना इज द बेस्ट वे और इट्स नॉट द बेस्ट वे. इज इट द बेस्ट वे और इट इज नॉट द बेस्ट वे? क्योंकि हमें इसको फिर जस्टिफाई भी करना है. तो आई थिंक दोनों साइड जा सकते हैं.
दूसरा वे लिख सकते हैं, बिल्कुल दूसरा वे लिख सकते हैं, दूसरा वे भी लिख सकते हैं कि यार अगर हम सप्लायर्स को पेमेंट डिले ना करें, तो बाकी हम ये कर सकते हैं कि कस्टमर्स को भी ऐसा कर सकते हैं ना कि यार 60 डेज का क्रेडिट ना दें। हम ये कर सकते हैं कि यार भाई आप कस्टमर्स जो हैं वो, उनको आप कोई उधार वही दे दें, कोई ट्रेड डिस्काउंट ऑफर या कैश डिस्काउंट दे दें, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दे दें कि यार अगर आपने लेट्स से 10 दिन में पैसे दे दिए तो आपको हम इतना डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। आ, नहीं, रिटेल कस्टमर्स नहीं। देखो ये वाला कंफ्यूजन सही करो कि हम यहाँ पे अपने सप्लायर्स की बात कर रहे हैं, सप्लायर्स। हमारा सप्लायर रिटेलर नहीं है, हमारा कस्टमर है रिटेलर। तो रिटेलर्स बिजनेसेस जो हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है। यानी कि हम अपने सप्लायर की बात कर रहे हैं। समझो मैं जिससे स्टॉक खरीदता हूँ, फिर मैं बेचता हूँ किसी रिटेलर को, फाइनल, यानी कि सप्लायर इज समवन एल्स, रिटेल कस्टमर तो मेरे बेसिकली वो है, कस्टमर्स हैं, सही है। तो द पॉइंट इज के अगर हम अपने सप्लायर को डिले करते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि आप अगर डिले करते हो तो काफी हद तक आपकी पेमेंट डिले हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने स्टॉक खरीद लिया और फिर आपने उसको पैसे भी नहीं दिए, तो दैट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग position for your business. However, what you can also do is you can maybe cut down some of the credit that is offered to the customers, but फिर उसके भी consequences होंगे। फिर हम उसको ओवरऑल सजेस्ट करेंगे कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट मेथड होगा। चलो मैं लिखवाता हूँ पहले, ताकि अब आपको समझ आए कि हम इसमें लिखते कैसे हैं, सही है। इफ इफ वाला वर्ड भी आपको पता है कि इफ वाला वर्ड हमारा बड़ा फिट चलता है। इफ द पेमेंट if payment to suppliers is delayed, if payment to supplier is delayed, then if the payment to supplier is delayed, then it can negatively affect the relations. It can negatively affect the relations with the suppliers, with the suppliers. They might they might decide they might decide not to supply not to supply with material such as wax. They might decide not to supply with material such as wax, and disturb this can disturb the production. क्या करते हैं हम, प्रोडक्शन, ये क्या सही है, मेक्स बनाती है खुद ना। This can disturb the production of candles. This can disturb the production of candles. However, however, if the credit period is negotiated, however, if the credit period is negotiated from suppliers, then CARA will be able to CARA will be able to purchase the stock. Then CARA will be able to purchase the stock
CAIE will be able to purchase the stock without having to pay. This can help her to reduce, this will help her to reduce cash outflows and therefore improving the cash flow position. Therefore, improving the cash flow position. Overall, अब हमें कंक्लूजन भी देना है कि आपके हिसाब से क्या होगा. Overall, I think negotiating a credit period will allow CAIE will be important for CAIE as she is also offering 60 days credit to retail customers. Overall, I think negotiating a credit period will be important for CAIE as she is also offering 60 days credit to retail customers. This should be done. This delay should be first agreed. यानी कि सप्लायर से अग्री करा के करना, ऐसे नहीं कर लेना. This delay should be first agreed with the supplier to ensure relations are maintained. As it is a small business, disturbing retailers with credit with reduced, थोड़ी सी भूलने की एक्टिंग कर रहा हूं, with reduced credit might affect the loyalty of customers. आप भी भूलने की एक्टिंग कर सकते हैं, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि लाइन में रहे ना, इसलिए. ठीक है, आइडियली आई शुड complete my answer in the given lines, and that's how you do it. You can also एक्टिंग कर सकते हैं भूलने की. बेसिकली समझ आया?